Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is GHAYYAS Ahmed from Learn Pashto Language YouTube channel. Today we are going to discuss some sentences of daily use. Part first. He is man of word. वो वादे का पक्का है. हगा द लवस पोखते. हगा वो the lovers वादे का पक्का है पोख दे. Or we can say हगा द वादे पोख दे. हगा वो दवादी वादे का पोख दे पक्का है. He always keeps his promise. वो हमेशा अपना वादा पूरा करता है. हगा वो तल या हमेशा हमेशा अपना खपल खपला वादा वादा. खपल is used for masculine as promise is feminine, so we use खपला instead of खपल. खपला is used for feminine. वादा वादा पूरा करता है पूरा कई. हगा तल या हमेशा खपला वादा पूरा कई. He was curly straight hair. He was curly or straight hair. उसके घुंघरियाले या सीधे बाल हैं. द हगा उसके for masculine. द हगी for feminine. द हगा उसके for masculine. गुलगुती गुलगुती घुंघरियाले. नेग सीधे. वेख्तो बाल दी हैं. द हगा गुलगुती यानी वेख्तदी उसके घुंघरियाले या सीधे बाल हैं. She always thought of my good, but I always took wrong and doubted on her loyalty. उसने हमेशा मेरी भलाई का सोचा लेकिन मैंने हमेशा गलत समझा और उसकी वफादारी पर शक किया. हगा उसने for masculine. हगी उसने for feminine. हगी उसने तल या हमेशा हमेशा. जमा मेरी द खेगड़ी भलाई का सोच सोचा. उकू सोच उकू सोचा लेकिन खो माँ मैंने हमेशा तल या हमेशा गलत गलत गणल समझा और औ द हग उसकी for masculine. द हगी उसकी for feminine. द हगी उसकी वफादारी पर वफादारे में शक उकू शक शक किया उकू शक किया. हगी तल या हमेशा जमा द खेगड़ सोचो को खो मा तल या हमेशा गलत गणल और द हगी पर वफादारे में शक उकू. That's what you always say. ये तुम हमेशा ही कहते हो. दा ये हो तो तुम तल या हमेशा हमेशा ही कहते हो वे. दा हो तो तल या हमेशा वे. What's wrong with you? आपको क्या तकलीफ़ है. स्तासु आपको स क्या तकलीफ़ तकलीफ़ दे है. स्तासु स तकलीफ़ दे आपको क्या तकलीफ़ है. He is a well educated man. वो एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है. हगा वो यौ एक ख अच्छा खासा तालीम याफ्ता पढ़ा लिखा सड़े आदमी दे है. हगा यौ ख तालीम याफ्ता सड़े दे. He is not as rich as his brother. वो इतना अमीर नहीं जितना इसका भाई. हगा दुमरा मालदारा न दे सुमरा चिदा हगा रोर. हगा वो दुमरा इतना मालदारा अमीर नहीं न दे जितना सुमरा के ची इसका दहग रोर भाई. हगा दुमरा मालदारा न दे सुमरा ची दहग रोर. His honesty is beyond doubt. उसकी ईमानदारी शक से बालातर है. दहग उसकी for masculine. ईमानदारी दहगी for feminine. द शक न शक से न से शक शक बालातर वतली वती या बहर या बरा है. द हग ईमानदारी द शक न वती वतली या बहर या बरा दा. We can use any of the word for बालातर beyond.
بهر برا وتلی یا وتی. Let's repeat the Pashto sentences for the sake of easiness. هغه د لوس پوخ دی. هغه د واده پوخ دی. هغه تل یا همیشه خپل وعده پوره کوي. د هغه ګلګوتې یا نیغ ویښته دي. هغې تل یا همیشه زما د ښېګړې سوچ وکړو خو ما تل یا همیشه غلط ګڼل او د هغې په وفادارۍ مې شک وکړو. دا خو ته تل یا همیشه وې. ستاسو څه تکلیف دی؟ هغه یو ښه تعلیم یافته سړی دی. هغه دومره مالداره نه دی څومره چې د هغه رور. د هغه ایمانداري د شک نه وتلې بهر یا بره ده. If you like this video, give it a like. If you want to ask something, you may ask here in the comment section, or you may join us on Facebook by visiting the links given in the description of this video. You can share this video with your friends and family whom you care about. And don't forget to subscribe to our channel. See you soon in the next video lesson. Till that, fi amanillah. Assalamu alaikum.